हाय गाइस, अमे फैमिली साथे तरफ वाणीनाथ गामे वाणीनाथ महादेवना दर्शने आवी गया छीए। जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल शिवराज प्रोडक्शन पर। आज तमने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित करेलू विश्वनु एकमात्र एवं मंदिर के जो भगवान शिवनु शिवलिंग नहीं पण त्या भगवान शिवनी मूर्ति पूजाय छे एवा मंदिरना दर्शन करावीश अने एना इतिहास विषे जणावीश। तो विडियो में पूरेपूरा बन्या रहेजो अने विडियो गमे तो विडियो ने लाइक शेर अने अमारी यूट्यूब चैनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करजो। भारतनी पवित्र भूमि में गुजरात अने आ गुजरात में उत्तर गुजरातनी पावन धरा पर अति प्राचीन द्वापर युगनु भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित वाणीनाथ महादेवनु मंदिर आवेलू छे। आ मंदिरनो भव्य अने उजरो इतिहास है। गोपीपति गोलोकपति गोप गोकुलानंद जीवन जशोदानंद के नमु कृष्ण वज संग आवा भगवान श्री कृष्ण पोताना संग साथे आ दर्भना जंगलों में रोकाय छे। आ दर्भना जंगलों एटले हालनो वाणीनाथ। रूपेन नदी कुंवारिका एनो आ पवित्र प्रदेश एटले दर्भना जंगलनो प्रदेश। अहींया भगवान श्री कृष्ण संग साथे रोकाय छे अने पोताने अति प्रिय एवा गोवारो साथे अहीं रासलीला करे छे। परंतु आ रासलीलामां बाहरी पुरुषोनो निषेध हतो अने भगवान सदाशिव भोळानाथ एटले एक बिल्वपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार दयालु रिचके देते हैं चंद्रमौली फल चार। भगवान शिवने आ रासलीलामां भाग लेवानी इच्छा थाय छे। पोते एमां सहभागी थवानी इच्छा थई पण बाहरी पुरुषोने आ रासलीलामां जवानो निषेध हतो, जेथी भगवान शिवे गोपीनुं रूप धारण कर्युं अने आ रासलीलानी अंदर भगवान शिव गोपी रूपे पधारे छे। परंतु अहींया आ समय दरमियान भगवान श्री कृष्ण भोळानाथने ओळखी जाय छे के आ रासलीलामां भगवान शिव पोते पधार्या छे। भगवान शिव पासे जई कृष्णए कह्युं, हे भगवान सदाशिव शंकर, आप तो अमारा आराध्य छो। आप आ रासलीला में पधार्या ए तो अमारा सौनु सौभाग्य छे। माटे आप पोताना सत्य स्वरूपना दर्शन आपो अने आपणा माटे तो कोई जग्याए निषेध होय ज नहीं। भगवान आप तो देवोना पण देव महादेव छो। त्यारे महादेवे पोतानुं सत्य शिव स्वरूप धारण करी प्रगट थया। भगवान पोते सत्य शिव स्वरूप में प्रगट तो थया पण कानमां वाड़ी रही गई अने आ वाड़ी रही जवाथी भगवान महादेव वाड़ीनाथ कहेवाया। माटे अहीं शिवलिंग नहीं पण वाड़ी धारण करेल भगवान शिवनी मूर्ति पूजाय छे, जे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित करवामां आवी हती। जो भगवान शिव साक्षात प्रसन्न थया हता। कदाच विश्वनु आ एक ज प्राचीन मंदिर हशे जो शिवलिंग नहीं पण शिवनी मूर्ति पूजाय छे। समयनी अनेक सदीओ वीती गई अने श्री कृष्ण द्वारा स्थापित वाणीनाथ महादेवना मंदिर उपर 3 नदीओना थर जामी गया। पण जो सत्य शक्ति अने दिव्यता छे ए जागृत थया वगर रहती नथी। आजथी 9 सदीओ एटले के 900 वर्ष पहला रूपेन नदी कांठे तरभुवन मोयडा नामनो रबारी गौपालक गायो चरावतो हतो अने त्यां वसवाट करी रहेवा लाग्यो। तेनी कुलदेवी श्री चामुंडा माताजीए आ तरभुवन मोयडा रबारीने सपना द्वारा चेतना पूरी अने समग्र मंदिर तथा तेना स्थापननी जाण करी अने साथे साथे ए पण कह्युं के त्यां वृक्ष नीचे बेठेला संत पुरुष ने आ वातनी जाण कर। ए संत एटले वाणीनाथ गादीना प्रथम गादीपति महंत श्री वीरमगिरी बापू। तरभुवन रबारीए महंत ने जाण करी अने ए जग्याए खोदकाम कराव्युं ते त्यां प्राचीन मंदिरना निशान अने मूर्ति निकળી। तरभुवन मोयडा रबारीए वीरमगिरी बापूने गुरु तेमज मंदिरनी गुरुगादी तरीके स्थापना करी महंतनी सेवा चालू करी अने त्यां गाम बधी वसवाट कर्यो। ते गाम एटले आजनु तरब गाम, जे तरभुवन मोयडा रबारी आजथी 900 वर्ष पहला वसावेलू हतुं। रबारी समाजनी गुरुगादी तरीके स्थापित पवित्र वाणीनाथ गादीना गादीपति महंतो ज्यारे गिरनाરની यात्राए जता हता ए समय दरमियान सौराष्ट्રના काठीओने त्यां મહેમાનગતિ करता हता अने त्यां धर्म उपदेश आपता हता। आथी वर्षो पूर्वे सौराष्ट्रनो काठी समाज पण वाणीनाथ मंदिर उपर रबारी समाज जेटली ज आस्था धरावतो हतो अने एक काठी भगते तो इंद्रने पण ईर्षा आवे एवी रेमी घोड़ी भेट करी हती, जे घोड़ीनो वंश आजे पण वाणीनाथ धाममां हयात छे। तो एक मकवाणा हाथना रबारीए गादीपतिने ओंधळी गाय लाडसी भेट आपी हती। समयांतरे श्री कृष्ण द्वारा स्थापित वाणीनाथ मंदिरमां फेरफार थतो रह्यो। खोदकाम कर्या बाद दरेक गादीपतिए पोताना समय दरमियान यथाशक्ति मुजब मंदिरमां जीर्णोद्धार अने नवो आकार आप्यो।
પૂર્વ ગાદીપતિ પરમ પૂજ્ય ધુરંધર 1008 મહંત શ્રી બળદેવગીરી બાપુએ ₹400 કરોડના ખર્ચે ભવ્ય નવીન વાડીનાથ મંદિરના નિર્માણનો આરંભ કરાવ્યો હતો, જે હાલ વર્તમાન ગાદીપતિ શ્રી જયરામગીરી બાપુએ પૂર્ણ કરાવ્યો. નવનિર્મિત શિવધામની સ્થાપના કરી. ભલે વાડીનાથ રબારી સમાજની ગુરુગાદી તરીકે સ્થાપિત હોય, પણ પ્રાચીન કાળથી મંદિર દરેક સમાજ માટે શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે તથા સામાજિક સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. દરેક ગાદીપતિ દરેક સમાજમાં પોતાની સત્યકર્મની સુવાસ ફેલાવતા જ હોય છે. આ સત્કર્મમાં અનેક સંત સતીઓ અને સાધુઓનું જીવન માત્ર સનાતન ધર્મ જ નહીં. મુસ્લિમ સમાજમાં પૂર્વમાં વાડીનાથમાં અપાર શ્રદ્ધા હતી. મંદિરમાં 12 વર્ષની મુસ્લિમ બાઈ નાથીબાઈએ જીવન સમાધિ લીધી હતી, જેનો પુરાવો છે. સદીઓ પૂર્વે લખાયેલા પદ્મનાભના કાન્હદે પ્રબંધ નામના પ્રાચીન ગ્રંથમાં રૂપેણ કોથાના દર્ભના જંગલમાં વાડીનાથ મહાદેવના મંદિરનો ઉલ્લેખ એ સર્વજ્ઞાતિના આસ્થા કેન્દ્ર એવા મંદિરની પ્રાચીનતા અને ધાર્મિકતાનું મહત્ત્વ દરેક શાસકોએ તથા આઝાદી પછી પણ દરેક મુખ્યમંત્રીઓએ જાળવતા રહ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં વર્ષોથી ચાલતું કોઈ મોટું અન્ન ક્ષેત્ર હોય તો તે વાડીનાથ ધામ છે. આ ઉપરાંત વાડીનાથ ભારત વર્ષના 13 પવિત્ર 10 નામી અખાડામાં સ્થાન પામેલ છે. આ 13 અખાડા કુંભના મેળામાં સ્થાયી સ્થાન કરે છે અને તેમનું શાહી સન્માન એ વાડીનાથનો ઉજળો ઇતિહાસ છે. આપણી ઉત્તર ગુજરાતની ધરા પર આવેલ વાડીનાથ મહાદેવના મંદિરનો શબ્દોમાં તો એની દિવ્યતા, એની ભવ્યતા અને મહાત્મને શું વર્ણવી શકાય, પણ આ તો તમારા સુધી પહોંચાડવાનો અમારો નમ્ર પ્રયાસ છે. તો આ ભગવાન વાડીનાથ મહાદેવનું મંદિર જિલ્લો મહેસાણા, તાલુકો વિસનગરના તરફ ગામમાં આવેલું છે, જ્યાં લાખો લોકો દર્શનાર્થે આવે છે અને મહાદેવના દર્શન કરી, સંતો મહંતોના દર્શન કરી ધન્યતા દિવ્યતા અનુભવે છે. જય વાડીનાથ મહાદેવ. વાડીનાથ ધામની અંદર રહેવા જમવાની સરસ એવી સગવડ છે, તો તમે પણ એકવાર જરૂર દર્શન કરવા આવજો. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય વાડીનાથ.